Okay, students, good afternoon to all. I hope you all are well at home. And today topic is data encryption standard. And listen one thing कि जो आज का हमारा टॉपिक है ये थोड़ा लेंथी है, तो इसलिए अगर आपको कोई भी डाउट हो, इफ यू हैव एनी डाउट, यू जस्ट राइट डाउन ऑन योर बुक, ऑन योर कॉपी, ठीक है, नोटबुक। एंड जैसे ही हमारा लेक्चर खत्म होता है, ये टॉपिक खत्म होएगा, तो वो हम आपके जो डाउट्स हैं वो हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। इन बिटवीन लेक्चर के बिटवीन आई विल कवर ऑल दी कॉन्सेप्ट्स, ओके, वन बाय वन, कैसे हुआ है, कैसे हो रहा है, ये कैसे चल रहा है, ईच एंड एवरीथिंग आई विल एक्सप्लेन इन डिटेल। और इफ यू हैव एनी डाउट जस्ट राइट डाउन ऑन योर नोटबुक, ओके। तो जैसे ही लेक्चर खत्म होता है वो सारे के सारे हम उस बाद लेक्चर के बाद जो वो आपके जो डाउट्स होंगे वो डिस्कस कर लेंगे, या इन बिटवीन कोई मैसेज मतलब ऐसे मतलब कि क्योंकि फिर वो हमारा जो सीक्वेंस है वो ब्रेक हो जाता है ऐसे, ठीक है ना। फिर भी अगर कोई भी बहुत इमरजेंसी कोई हो, अगर आपने कोई ज़रा पूछना हो क्वेश्चन कोई, तो यू कैन सेंड मी ए मैसेज, ओके। एंड लेट्स स्टार्ट द टॉपिक data encryption standard. Data encryption standard. Okay, it is a block cipher. It is a block cipher. Block cipher means our plain text is divided into blocks. Our plain text is divided into blocks. That's why it is called block cipher. Okay. Next point is it is symmetric. Symmetric cipher. Symmetric cipher means the same key is used for encryption and decryption. Okay. Block cipher means the plain text is divided into blocks. That's why it is called block cipher. Second point is it is symmetric cipher. Symmetric cipher means we use same key in encryption and decryption. Okay. The third point is, and the most important point is, it is 64-bit plain text block. It uses 64-bit plain text block. This means the plain text is divided into blocks and each block is of 64 bits. Clear? These are the important points of data encryption standard. First point is block cipher. This means the plain text is divided into blocks. Okay. Second point is symmetric cipher. DES is a symmetric cipher, means the same key is used as encryption and decryption. Third point is, the most important point is 64-bit plain text block. In DES, the plain text is divided into blocks and each block is of 64 bit. Okay, this is about. And fourth point is 16 rounds. 16 rounds. This means our encryption goes through 16 rounds. Okay, in I will explain you in each round how कि हमारी कैसे calculation होती है in each round. Okay, and DES use 16 rounds for encryption and decryption. Okay, next is steps. Next is steps. ये पॉइंट्स जो है नोट डाउन करते जाओ। हमारी जो डायग्राम्स होगी वो साथ साथ में आपने ड्रा करनी है और उनको ही मैंने एक्सप्लेन करना है इन डिटेल। ओके, सो ध्यान से ये सारा लेक्चर सुनना है, डायग्राम्स देखनी है और उसको ड्रा करना है। द स्टेप्स, फर्स्ट स्टेप इज
in journal steps, and these are in journal steps. The first step is initial permutation. Initial permutation. Permutation means we rearrange our bits. We rearrange our bits. That is called initial permutation. At initial stage, firstly we rearrange our bits. For example, 10th position bit is replaced with the 5th position bit, and 20 position bit is replaced with the 25 number bit. Okay, like this. And the initial permutation means our plain text bits are rearranged. Our plain text bits are rearranged. And second step is 16 rounds. 16 rounds means DES, for the purpose of encryption, we go through 16 rounds for encryption. Clear? And third step is swapping. After 16 rounds, we swap our data. We swap our data. After 16 rounds, we swap what we get. That data is swapped. Okay. And last is final permutation. Final permutation. Okay. Final permutation means again in the last step we rearrange our bits that we get from after swapping. Okay, the first step is initial permutation. We rearrange our bits of plain text. Second step, we perform 16 rounds on plain text. After that, we swap our data or swap our bits, and the last step is final permutation. Again, we rearrange our bits. Okay, these are the steps which we use for encryption by DES. Next is basic structure. Next is basic structure. Basic structure. Okay, the basic structure is we have 64-bit plain text. As I told you, our data is divided into blocks, and each block is of 64-bit. The first step is 64-bit plain text. Second, after that, the first step is initial permutation. Initial permutation. Okay, after that we go through various rounds. Suppose this is round 1, this is round 2, and so on up to round 16. Up to round 16, and each round has its own key. Okay, and we have 48-bit key, 48-bit key, and 48-bit key. Okay, 56-bit key. Initially we have 64-bit key. Okay, initially we have, no, listen, here the key which we pass to the round, various rounds, that key is of 64-bit initially. After that, we convert 64-bit into 56-bit key by using a process. We convert 64-bit into 56-bit key. And how we will convert 64-bit into 64-bit key, I will explain. Okay. After 56-bit key, we convert 56-bit key into 48-bit key. And this 48-bit key is applied to various
rounds. And listen, for round one has uh, its own key, round two has its own key, and all the keys are different. All the keys are different for each round. Okay, all the keys are different for each round. राउंड वन की अलग होगी, राउंड टू की अलग होगी, सो ऑन राउंड 16 की जो है वो अलग होगी. इन दिस वे these rounds we perform by using DES, and the next is swapping, and last one is final permutation. And after final permutation we will get 64-bit cipher text. Okay, this is the basic structure. Firstly, we have 64-bit plain text. On 64-bit plain text, we perform initial permutation. Okay, we in initial permutation we rearrange our bits. After that, round one. अब राउंड इन राउंड्स में क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा. राउंड वन, नेक्स्ट राउंड टू, एंड सो ऑन अप टू राउंड 6. ओके, जो हमारा डेटा है 64 डेटा गोज थ्रू वेरियस राउंड्स, एंड आफ्टर राउंड 16 वी विल परफॉर्म स्वैपिंग ऑन द डेटा, एंड the data we get after swapping that goes to the final permutation, and after final permutation we again rearrange our bits, and after final permutation we will get 64-bit cipher text. 64-bit cipher text. Clear? Okay, this is the basic structure of DES. First we have 64-bit plain text. Next step is initial permutation, then 16 rounds, and after 16 rounds we have swapping, and after swapping the final permutation step we perform, and after final permutation we will get 64-bit cipher text. Okay, note 48-bit key for all 16 rounds will be different. वही बात जो मैंने आपको बताई है कि all rounds have different keys. Okay, same key is not used for all the rounds. Different keys are used for all the rounds. Clear? This is about basic structure of DES, and also we have 64-bit key. Initially we have 64-bit key. That key is converted into 56-bit by some process, and after 56-bit key we again convert 56-bit into 48-bit key after some process. Okay, and then that 48-bit key is applied to various rounds. Clear? Okay, next. Now what is round? What action performed in round? These rounds are also called festal round. These rounds are also called festal round. FIESTELROUNDS. Festal round. These rounds are also called festal rounds. Now we will discuss round one. Okay, round one में क्या काम होता है वो हम देखते हैं. फेस्टिवल राउंड्स क्या होता है. ओके, and same procedure is used for all the rounds. Okay, I will tell you only working of round one, and that working is same for all the 16 rounds. Okay, let's discuss about rounds. Festival round.
Yes. Is it visible to all of you? Yes or no? Okay. Now listen. Uh, what we do in rounds, the working of round one is, firstly we get 64-bit data, and that data is divided into two parts: left 32 bits and right 32 bits. Okay. The data is converted into two parts: left 32 bits and right 32 bits. Okay. On right 32 bits, that data goes to a function. That data goes to a function with 48-bit key. With 48-bit key. Now the question is here. The question is, what is the main function of this function? Okay. The working of this function I will discuss in the next. Okay. Now the right 32-bit is goes to this function with 48-bit key, that is key 1. Whatever the output of this function, it is a XOR. It performs the XOR operation with the left 32-bit, and the output of this XOR operation goes to the new right 32-bit. ओके. यहाँ तक हमारा राउंड वन है. राउंड वन में क्या हुआ? 64-bit डेटा इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट: राइट 32-bit डेटा एंड लेफ्ट 32-bit डेटा. सॉरी, राइट 32 डेटा गोज टू अ फंक्शन. अब इस फंक्शन में क्या काम होता है वो मैं डिस्कस करूंगा आगे. राइट 32-bit data is goes to this function with 48-bit key. Whatever the output of this function, it goes to this component, and here we perform XOR operation. Here we perform XOR operation with left 32-bit data. Whatever the output, जो भी XOR operation की output होगी, that will be the new right 32-bit data for next round. Okay. जो भी इसकी output होगी वो next round के लिए क्या होगी? New right 32-bit data होगी. Clear? और ये जो राइट एंड दिस राइट 32-bit डेटा इज गोज टू डायरेक्टली फॉर न्यू लेफ्ट 32-bit डेटा. ओके. दिस इज द वर्किंग ऑफ राउंड वन. तो इसी तरह से बाकी सारे राउंड्स की वर्किंग ऐसे ही होगी. क्लियर? ऑल द रिमेनिंग राउंड्स वर्क लाइक दिस. ओके. दिस इज द वर्किंग ऑफ राउंड वन. This is round 2. New right 32-bit data goes to the function which performs some operation, and the output of this function is XORed with left 32-bit, and the output of this component goes to for the next 32, the next new right 32-bit data for round 3. Okay. In this way the round works. Okay. सभी 16 जो हमारे राउंड्स हैं उन सब में ऐसे ही वर्किंग होनी है. क्लियर? इनिशियली 64-bit डेटा को दो पार्ट्स में डिवाइड किया, राइट 32-bit एंड लेफ्ट 32-bit. या राइट 32-bit एक फंक्शन के पास गया. वी इन दिस फंक्शन वी परफॉर्म सम ऑपरेशंस, एंड विद 48-bit की क्या ऑपरेशन होते हैं वो मैं अभी डिस्कस करता हूँ आपके साथ. द आउटपुट ऑफ दिस फंक्शन गोज टू दिस कंपोनेंट. ओके. हियर we will perform the XOR operation with the output of this function and with the left 32-bit data, and whatever the output of this component is the new right 32-bit data for round 2. Okay. And this right 32-bit data is assumed for new left 32-bit. Okay. In this way next round works in similar way. ओके. बाकी के जितने भी हमारे राउंड्स हैं वो सारे के सारे इसी तरह ही जो है वो क्या होंगे? वर्क करेंगे. क्लियर? क्लियर?
यहाँ तो कोई डाउट है तो बताओ, यस और नो में मैसेज करो। If you have any doubt, just write on your notebook. I will discuss after few minutes. Okay? बहुत इजी है, जस्ट ये थोड़ा सा लेंथी जरूर है बट इजी बहुत है ये। क्लियर? इजी बहुत है, बस थोड़ा सा लेंथी है। नाउ नेक्स्ट आई विल डिस्कस दिस फंक्शन, दिस पार्ट ऑफ फेस्टिवल राउंड, which this function what it does perform, ये क्या काम करता है, ये हम अब देखेंगे कि ये फंक्शन क्या करता है। ये डायग्राम जो है उसको साथ साथ में ड्रा करते जाओ। एंड सो द नेक्स्ट इज फंक्शन डेफिनेशन। नो नेक्स्ट आई विल डिस्कस अबाउट दिस फंक्शन। ओके, yes, the function will receive 32-bit data. Because why the function receives 32-bit? Because 64 data is divided into two parts, left 32-bit data and right 32-bit data. So the right 32-bit data goes to the function. So function receives 32-bit data. Okay, and this 32-bit data goes to expansion box. This 32-bit data goes to expansion box. Okay, after expansion box, we get 48-bit data. 48-bit data. हुआ क्या? 32-bit data पे expansion box को गया, but it generates 48-bit data. इसने क्या कर दिया? हमारे 32-bit data को क्या किया? Expand करके 48-bit का कर दिया. Okay, now this 48-bit data and key values and key value, this 48-bit data and 48-bit key and 48-bit key K1 performs XOR operation and its output is of 48-bit. Why we convert 32-bit into 48-bit? Because our key value is of 48-bit. So for performing XOR operation, we also need this data is of 48-bit. So that's why we expand this 32-bit data into 48-bit data. Clear? Now perform XOR operation on 48-bit data with 48-bit key K1 and the output of XOR operation is of 48-bit. Now next we have to convert again this 48-bit data into 32-bit data. ओके, हमें क्या करना है? फिर से 48-बिट डेटा को कन्वर्ट करना है 32-बिट डेटा में. क्लियर? सो फॉर कन्वर्टिंग दिस 48-bit डेटा इनटू 32-bit data, for that purpose we use S box. We use S box. S box is the substitution box which converts this 48-bit data into 32-bit data. Okay, which converts here we use 8 S box. 8 S box and each S box is of 6-bit input. अरे इसकी इनपुट कितनी होगी? 6 बिट की होगी. ओके, तभी तो 8 इंटू 6 is equal to 48. Clear? This 48-bit is we want to convert this 48-bit data into again in 32-bit data. For that purpose we will use 8 S boxes for converting 48-bit data into
32-bit data. 8. And after that, we will get 32-bit data and perform permutation. Again, perform permutation on 32-bit data, and whatever the output. Yes, देखो ये हमारी क्या 32-bit की output आएगी, and this 32-bit output will perform XOR operation with left 8-bit data. जो हमने लास्ट डायग्राम में किया था, लेफ्ट 8-bit data के साथ ये क्या करेगा, XOR operation perform करेगा. Okay, this 32-bit data will perform XOR operation with left 8-bit data. Clear? This is about function which we used, okay, in various rounds. What is that? The function will take 32-bit data as input, convert this 32-bit data into 48-bit data by expansion box. The expansion box कैसे काम करता है अभी मैं डिस्कस करता हूँ. Expansion box, and the output of this expansion box will be 48-bit and perform XOR operation with key bits. 48-bit की हमारी की जो है वो 48-bit की है, इसलिए हमें 32-bit से 48 कन्वर्ट करना पड़ा. ओके, तो XOR operation perform हुआ. After performing XOR operation, we get 48-bit data. No, it is also a 48-bit data. Okay, the output of this XOR operation will be 48-bit data, but our required data is of 32-bit. So that's why we have to convert this 48-bit data into 32-bit data by using S box. These boxes are called substitution box. The substitution box will convert this 48-bit data into 32-bit data. On this 32-bit data, we will perform permutation, and the output of this permutation, that is of 32-bit data, and this 32-bit data will perform XOR operation with left 32-bit data. Okay, and the output of that XOR operation will be the new write 32-bit data for next round. Okay, this is about function. Now I will discuss about expansion box. How expansion box works, I will explain how the expansion box converts this 32-bit data into 48-bit data. Clear? Okay. जो भी डायग्राम में ड्रा कर रहा हूं उसको साथ में ड्रा करते जाओ बस आप. Clear? Now I will discuss expansion box. How expansion box works. What happens in expansion box? Okay, this 32-bit data is in binary form, that is of 1-0 form, but for the simplicity we will use letters. Okay, for a better explanation we will use letters. Okay, now we have 32-bit data. We have 32-bit data. Now this data is divided into 8 groups, or you can say 8 blocks. Okay, 8 blocks, and each block is of 4-bit. Okay, that is equal to 32-bit. Okay, we convert this 32-bit data in expansion box. We convert this 32-bit data into 8 blocks, and each block is of 4-bit. For example, these blocks are like this. 1, 2, 3. मैं letters में ले रहा हूं कि easily आपको समझ आ जाएगा. Let us suppose the value of these blocks don't give. First block is don't give, second block is give, next is THE, don't give the money, so on.
पूरा लिख लेना, ठीक है. एंड द लास्ट ब्लॉक इज एवर. We have total 8 blocks, 1, 2, 3, 4 up to 8, and each block is of 4 bit. हर एक ब्लॉक की ये वैल्यूज है, एक सेल की ये वैल्यूज है. ओके, डोंट गिव द मनी टू दैट पर्सन एवर. ये मैसेज है इन ब्लॉक्स. नाउ हाउ टू कन्वर्ट this 32-bit data into 48-bit data? There is a procedure. What is the procedure? We write, for example, if we write this message, give. Now, how to expand this 4 bits into 6 bit? We have to convert this 4-bit block into 6-bit block. तभी तो हमारा क्या होगा, 8 into 6 is equal to 48 bits का बनेगा मैसेज. Okay, so that's why we have to convert this 4-bit block into 6-bit block. And how we convert this 4-bit block into 6-bit block? We pick the last letter of the first block, because this is our first block, this is second, third, ये 8th है. Okay, now we are converting this second block into 6-bit. Now pick the last character of the first block, that is T, and put it into here. In the same way, pick the first character of the third block, put the first character, that is T, of the third block, and place it here. Okay, now we have 6 bits, 1, 2, 3, 4, 5, 6. In the same way, this procedure is applied for all the blocks. Let us suppose if we have this don't give the money, money. Now we have to expand this block number 3rd. How we expand it? So write THEM. Now we have to expand this block from 4 bits into 6 bits. Clear? How we expand it? First, pick the first letter of 4th block. Pick the first letter of the 4th block and put into here. Clear? Add it at the last of the THEM block. Clear? Now here, pick the last letter of the block 3rd and put it here. In this way we expand our blocks from 4 bits to 6 bits. In this way, all the blocks are converted from 4 bits to 6 bits. Okay, so after converting this 4-bit block into 6-bit block, we will get 8 into 6 is equal to 48 bits. Clear? Okay, we have 8 blocks and each block is of 48 bit. So that's why, so that we get 48-bit data. In this way, expansion box converts 32-bit data into 48-bit data. Okay, that is the working of expansion box. Now this 48-bit data is will perform XOR operation with 48-bit key, and it will generate 48-bit output. Okay, now the next thing is to convert this 48-bit data into 32-bit data again. Clear? So okay, another one thing is, now let us suppose we have this first letter. How to convert this first block
into 6 bits. So write down DONT, don't. Obviously, this block is filled with the letter G. Okay, G is put here, but how this block filled? How we will fill this block? For that purpose, we use circular way. We use circular way. We consider the last block, that is ever. Let us suppose write here ever, EVER. So this block is filled with R. Filled with R. In the same way, ever block is, how ever block means last block is filled. This empty block is filled with M from previous block. Okay. And how we fill this block? Again, you can write here don't. D-N-O-T, don't. Okay. So put the D here. Okay. In this way, first block and last block filled. In this way, you can convert 32-bit data into 48-bit data by using expansion box. Clear? This is the working of the expansion block. Now, so here every 4-bit block is converted into a 6-bit block. वही है जो मैंने आपको बता दिया है. ठीक है? Next important is, now we have to convert. Now we have 48-bit data. We have 8 blocks, which is of all of 6 bit. Okay, 8 into 6 is equal to 48 bit. And after that, we perform XOR operation with the key 48-bit key. We will perform XOR operation with 48-bit key. And what we get the result, that result is of also 48-bit. And that 48-bit result is again converted into 32-bit. And that 32-bit is converted by using S boxes. By using S boxes means substitution boxes. By using substitution boxes. So we have 8 substitution boxes. We have 8 substitution boxes. 1, 2, 3, S1, S2, S3, so on, S8. Okay, this S boxes has 6 inputs. 6 inputs कैसे? 48-bit is divided into 8 boxes and each box has 6 inputs is equal to 48 bits. That's why S boxes has 6 inputs, but it will generate 4 outputs. How? I will explain it. Each box has 6 inputs and so on. And it will generate 4 outputs. तभी तो हमारी 32-bit आउटपुट आएगी. And so on. Now there is a procedure how to convert these 6 inputs into into 4 bits. Let us suppose if S1 block has input, suppose if S1 block has input 0, 0, 1, 0, 1, 1. Suppose S1 block has 0, 0, 1, 0, 1, 1 inputs. These inputs 0, 0, 1, 0, 1, 1. Okay, clear? Now, first bit and last bit.
first bit and last bit will represent row. For the purpose of S blocks, we will create a S table. We call that S table. Okay, from S table, we convert this 6-bit data into 4-bit data. Okay, let us suppose S1 has input of this. Okay, first bit and last bit is used to represent row. And these bits 0 1 0 1 हमेशा ही ऐसे होगा. ये इसकी वर्किंग है. क्लियर? ये ऐसे ही वर्क करेगा. First bit and last bit is used to represent rows, and in between these bits are used to represent columns. Okay. So listen, ध्यान से देखना इस चीज को. Okay, we have two bits 0 and 1. It is in binary, but if you convert it into hexadecimal, what will be the number? Oh, sorry, into binary है, तो इसको आप नंबर में कन्वर्ट करोगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 01 represents 1. Okay, 1 is represented in binary is 01. Okay, and 0 1 0 1 equal to 5. Here we have 0 1 0 1 2 3. We have 4 rows. 0 0 equal to 0 0 0 1 1 0 1 1. Clear? And we have 4 bits which represents a column, and it makes 16 combinations. Okay, and we represent it 0 1 2 3 4 5 6 7 so on up to 15. Now listen, 0 1 equal to 1 means first row. We will consider first row. 0 1 0 1 represents 5, means fifth column. In this table we have values. Let us suppose we have values suppose these are the values in this table. Okay, now the first row and fifth column. ये हमें कहां से पता चला? ये इनपुट्स, इस इनपुट से हमने इसको बनाया है. कैसे बनाया है? फर्स्ट बिट एंड लास्ट बिट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट रो, and in between these bits are used to represent column. Here we have first row and this is fifth column. Okay, where these two bits intersect, that will be our required value. Means 7 is our required value, and it is equal to, in binary, 0 1 1 1, which is of 4-bit data. Okay, how to convert this 6-bit data into 4-bit data? This means this value 0 0 1 0 1 1 is converted into 0 1 1 1. Okay, in this way we will convert 6-bit data into 4-bit data, and this procedure is followed by all the S blocks.
And remember one thing, each S block has different S table, substitution table, has different substitution table. Let us suppose this is for S1 block. For S2 block, it is different. S3 block, it is different. Okay. I will send a PPT of these tables. Okay. So you can check. हर एक S block के लिए हर एक table अलग table होगा. Okay. In this way, you can convert these values 6-bit into 4-bit data. Okay. Clear? This is the function of S block. Clear? Clear, students? Okay. Now, this 32-bit data. Now, we have 32-bit data. This 32-bit data is now applied to the XOR gate. Okay, applied to the XOR gate and with the left 32-bit data. Clear? इस तरह से हम क्या करेंगे, इस 32-bit डेटा को क्या करेंगे, लेफ्ट 32-bit डेटा के साथ XOR ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे. See in the slide like this. This is the S box 1. In this way, we have the total 8 S boxes. We have total 8 S boxes. Clear? I will send the PPT. You can check from the PPT. Clear? Okay. Now the next is how 16 sub keys are generated. अब हमने क्या बोला था कि we have 16 rounds. We have total 16 rounds. Round 1, round 2, round 3, up to round 16. And each round has its own key. Each round has different key. Now the next point is how to generate these 16 sub keys. वो जो 16 sub keys है वो हम कैसे generate करेंगे? And another one thing I have told you, initially we have 64-bit key. 64-bit key, and that key is firstly converted into 56-bit key. After that, this key is converted into 48-bit key. और ये 48-bit की जो थी इसको पास करते थे हम फंक्शन को, और फंक्शन में ये क्या करता था, XOR ऑपरेशन परफॉर्म करता था. ठीक है ना? क्लियर? जो हमने फंक्शन में जो आपको एक्सप्लेनेशन दी है उसके साथ. Okay. Now the next thing is how to convert this 16-bit key into 48-bit key, and for all the rounds how to convert these 16 keys. 16 keys हमारी जो है सब की, how we generate these keys. Okay. So we have a diagram, right? We have a key that is of 64-bit. That key is applied to PC1. PC1 means permuted choice 1. PC means permuted choice 1. Next, the output of PC1 is of 56-bit. The output of PC1 is of 56-bit, and that output is divided into two parts, C0 and D0, which is of 28-bit. Clear? And we perform shift operation. We perform shift operation on these 28 bits. Shift left. We perform shift left. Shift left by 1 bit. Okay. Next, the output of this shift
is C1 and D1. Okay, C1 and D1. Clear? Now the output of C1 and D1 is passed to PC2. This is of 56 bit. The output of C1 and D1 is passed to PC2. PC2 means permuted choice 2. Permuted choice 2. Here PC1, permuted choice 1, will perform some operation. Okay, that converts a 64-bit key into 56-bit key. In the same way, this 56-bit key goes to, we send it to the permuted choice 2, and permuted choice 2 again performs some operation and produce 48-bit key. That is of key 1. That is of key 1. After that, this output of C1 and D1 from here, all these steps, this is for K1. Okay. Now, next we will perform shift on C1 and D1. Again, we perform shift left on C1 and D1, and this procedure is followed by all these 16 subkeys. Okay, now the next thing is PC1. What function performs PC1? How PC1 converts this 64-bit into 56-bit key. Okay, for this 64-bit data is converted into 8 blocks, and each block is of 8 bits. That is equal to 64. Clear? This 60-bit data is divided into 8 blocks, and this 8 block has 8 bits like this. Suppose this is block 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. These are the bits. This is block 2, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, and 16. Yeah, block 1, block 2, block 3, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, so on block 8 block. That is 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64. Now, the thing is how to convert this 64-bit key into 56-bit key. And this operation is performed by PC1, permuted choice 1. The permuted choice 1 will do? It will remove last bit of each block. It will remove last bit of each block. For example, bit number 8, 16, 24, 32, and 64. Permuted choice 1 will remove last bit of each block. एक block की last bit को क्या करेगा? Discard कर देगा. No, each block has 7 bits. Each block has 7 bits, and we have total 8 blocks, and each block has 7 bits. That is equal to 56. That is equal to 56. Now this 56 data is divided into 2 parts, C0, C1. C0 is of 28 bits, D0 is of 28 bits. Now perform shift operation, shift left operation. Now perform shift left operation. After performing shift left operation, suppose we will get C1 and D1. C1 and D1, which is of 28 bit. This is also 28 bit. Now this 28 bit, the 28 bit goes to permuted choice 2 block. Permuted choice 2 box के पास ये जाएगा, and permuted choice 2 will convert this 56 bit data into 48 bit key. 48 bit key.
What now the thing is what permuter choice 2 will do for converting the 56-bit data into 48-bit data. Permuter choice 2 क्या करता है, काम क्या करता है? permuter choice जो true होता है ना, ये क्या करता है, ये क्या करेगा, C1 block and this is D1. C1 block key, if I represent C1, or I will represent C1 1 to 28 bits and D1 29 to 56 bits. In this way, I can represent C1 bits and D1 bits. Now, permuter choice PC2, permuter choice P2, permuter choice PC2 will remove bits from the positions C1 की जो 9th, 8th, 22 and 25 bits की जो positions होगी उनको क्या कर देगा, रिमूव कर देगा. ये फिक्स्ड है, ये वाली पोजीशंस की बिट्स को रिमूव करेगा परम्यूटेड चॉइस 2. परम्यूटेड चॉइस 2 विल रिमूव bit positions 9, 8, 22 and 25 bit position. After removing these 4 bits, what we get? C1 equal to 24 bits. Okay, this is for C1. For D1, bit positions 35, 38, 43 and 54. These bit positions are removed from D1. And we remove 4 bits, 4 bits हमने remove कर दी, and we have D1 is equal to 24. And total we have 48 bit key. In this way, we convert 64-bit key into 48-bit key, and this procedure is followed by for every key. This is for key 1. For key 2, this same procedure is followed. For key 3, same procedure is followed. Okay. In this way, we generate key 16 sub keys. 16 sub keys. इस तरह से हम क्या करते हैं, जनरेट करते हैं. ठीक है जी. वही है जो मैंने अभी बताया है. PC1 permuted choice 1, inside PC1 64-bit key divided into 8 parts, each of 8 bit, that is 8 into 8 is equal to 64 bits, and remove last bit from each part, we will get 56-bit data. Okay. Yes, another one thing, shift. हमने बात की थी कि शिफ्ट हम लेफ्ट शिफ्ट करते हैं. कई राउंड्स में हम क्या करेंगे, बाय 1 लेफ्ट को शिफ्ट करेंगे और कईयों में हम बाय 2 शिफ्ट करेंगे, 2 बिट्स शिफ्ट करेंगे. एंड द राउंड्स like 1, 2, 9 and 16. Round number 1, 2, 9 and 16. In these rounds 1, 2, 9 and 16, in these rounds we shift to the left by 1 bit. Remember this thing. Okay. In rounds 1, 2, 9, 6, we shift left by 1 bit. And in the remaining rounds we shift 2 bits to the left. Okay. Only 1, 2, 9 and 16 round numbers we shift 1 bit to the left, and in the remaining rounds we will shift 2 to the left. Clear? This is all about DES, how DES works, how to convert 64-bit data into 48-bit, 32-bit, 32-bit to 48-bit, 48-bit to again 32-bit, and how the expansion box works, how S boxes work, and how we generate
16 सब की। ओके, तो ये मैंने आपको एक एक स्टेप के बारे में बताया। राउंड पिस्टल राउंड क्या होता है वो सारा मैंने बता दिया। एक राउंड 1 क्या होता है, सेम प्रोसीजर फॉलोड फॉर रिमेनिंग राउंड। एक्सटेंशन बॉक्स भी ऐसे ही वर्क करेगा, एस बॉक्सेस भी सेम ऐसे ही वर्क करेगा। ठीक है, की कैसे जनरेट करनी है वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर। ओके, नाउ इट्स योर टर्न। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन बिफोर डिस्कसिंग क्वेश्चन, I want to launch poll 1. After that, we will discuss your problems. Okay, now it's your turn. If you have any questions, you can ask me. But before discussing problems, uh, firstly, I want to launch poll 1, and after that, we will discuss your problems. Okay, so I'm going to launch poll 1. Students, you have 5 minutes for the poll. Okay. Arish, I have launched the poll, but check your net connection, your side. पोल तो मैंने लॉन्च कर दिया है, आपकी तरफ से शायद कोई नेट प्रॉब्लम ना हो, नेटवर्क प्रॉब्लम। आरिश, आदित्य देखो, हमारे पास क्या है कि मैंने क्या बोला कि हमने क्या करना है, आफ्टर देखो हमने क्या करना है कि हमारे पास सी नोट डी नोट वैल्यू आ गई है।
अब सी नोट का हमने क्या करना है, बिट्स को, ये बिट्स होंगी 28 बिट्स हैं ये, ठीक है, 0 1 की फॉर्म में, तो इसको हमने लेफ्ट को शिफ्ट करवा देना है बाय 1 बिट। कई राउंड्स, जो राउंड्स थे ना हमारे 16 राउंड्स थे, राउंड 1 2 3 1 2 16, कई राउंड्स में हम बाय 1 लेफ्ट को शिफ्ट करते हैं और कई राउंड्स में हम क्या करते हैं, बाय 2 बिट शिफ्ट करते हैं लेफ्ट को। जो जो राउंड जिनमें 1 को शिफ्ट 1 बिट शिफ्ट करते हैं वो वाले हमारे हैं 1 2 9 16। ये वाले जो राउंड्स होंगे हमारे फिस्टल राउंड्स जो होंगे, इनमें हम शिफ्ट करवाएंगे बाय 1 बिट, ठीक है। बाकियों में हम जो है वो उसमें हम क्या करेंगे, बाय 2 बिट शिफ्ट करवा लेंगे। Okay, all of you have done. No, no, Karthik, we will not perform shift right. We only perform shift left. तो ये एक एल्गोरिथम है जो डिसाइडेड है कि हमने लेफ्ट को ही शिफ्ट करवाना है, बिट्स को, राइट को नहीं, लेफ्ट को शिफ्ट करवाएंगे। वी ओनली परफॉर्म शिफ्ट लेफ्ट। Okay, students, I am going to end poll 1. Okay, no students, if anybody have any problem, raise your hand one by one. लेकिन बहुत इजी है, नो डाउट, थोड़ा सा लेंथी जरूर है। मैं नोट्स आज आपको, मोस्ट प्रोबेबली हमारा यूनिट 1 जो है ना वो नियर टू फिनिश है, तो अब मैं फ्री हूँ 2-3 दिन, तो मैं आई विल सेंड यू ऑल द नोट्स ऑफ यूनिट 1। ओके, so you can study from these notes. If you have any problem regarding DES, you can discuss with me. Any doubt, raise your hand, then I will unmute you. थोड़ा सा लेंथी जरूर है बट इजी है, बहुत इजी है। लेंथी जरूर है बट इजी है। Madhav, unmute yourself. Yes. गुड आफ्टरनून सर। Good afternoon. सर ये C1 और D1 की वैल्यू सर, ये जो आपने बताई है जैसे 35, 38, 43, 54, ये फिक्स है क्या सर? यस यस, ये बिट पोजीशन फिक्स हैं। इन बिट पोजीशन से ही हम बिट्स को रिमूव करेंगे फॉर प्रोड्यूसिंग 48 बिट की। ओके सर। और सर इनका क्या काम है सर, 1 2 9 एंड 16? देखो 1 2 9 और 16 ये राउंड्स हैं जो मैंने बताया ना आपको, किन राउंड्स में, कई राउंड्स में हमारी बिट्स बाय 1 लेफ्ट को शिफ्ट होंगी और कईयों में हमारी जो बाय 2 बिट लेफ्ट को शिफ्ट होंगी। अच्छा, है ना, तो ये राउंड्स हैं 1 2 9 16 जिसमें हमारी बिट्स जो है ना वो बाय 1 लेफ्ट को शिफ्ट करेंगे। इनको छोड़कर बाकी जितने भी राउंड्स हैं ना उन सब में बाय 2 बिट लेफ्ट को शिफ्ट करेंगे। ओके सर, ठीक है, ओके। यस, एनीबॉडी एल्स? ओके, बहुत ज्यादा हो गए। अंजलि, अनम्यूट योरसेल्फ। हरी अप, जल्दी करो बस, जल्दी जल्दी। हेलो हेलो, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बच्चे। सर हाँ जी, हाँ जी बोलो। आपने जो 8 सब्स्टिट्यूशन टेबल्स बताए थे उसके मतलब सर उसमें कैसे फिलअप किया था, टेबल कैसे फिलअप किया था?
देखो वो टेबल जो है ना उसमें वैल्यूज ऑलरेडी गिवन है, वो मैं आपको 8 टेबल्स होंगे टोटल, वो मैं आपको 8 टेबल्स भेज दूंगा। तो यहाँ पे तो Yes. मैंने जर्नल वैल्यूज अज्यूम की थी, ठीक है, लेकिन उनकी जो वर्किंग है वो बिल्कुल सेम यही है जो मैंने करवाई है, ओके सर। ठीक है। वो और टेबल्स सर की वैल्यू डिफाइंड है, प्री डिफाइंड टेबल है वो, टोटल 8 टेबल है, हर एक एस बॉक्स का एक टेबल है, क्लियर। तो आई विल ओके सर, सेंड और यू सर ऑल हम 8 टेबल। ओके सर, सर 64 बिट को हम 56 बिट पे ही क्यों कन्वर्ट किए? हम किसी और 48 बिट में क्यों नहीं कन्वर्ट किए? नहीं नहीं, ये पता कि ये हमारे जो DES स्टैंडर्ड है उसका एल्गोरिथम उन्होंने ऐसे ही इसको डिफाइन किया हुआ है कि जो हमारी की है वो 48 बिट की ही की यूज करेंगे। तो बट इनिशियली वो 64 की होगी, बट उसको हमने क्या करना है विद डेटा 48 के साथ यूज करना है। तो ये डिफाइंड है, ये हमारा कोई ये नहीं कि हमने खुद ऐसे किया है, ये एल्गोरिथम पहले से डिफाइंड है, ठीक है। ओके सर। ठीक है, आंचल मित्तर अनम्यूट योरसेल्फ। यस सर। हाँ सर जी, जो हमारे पास वैल्यू आई C1 D1 की जब हमने शिफ्ट, आपकी आवाज कम आ रही है। हेलो हाँ जी, हाँ जी, सर, जो हमने शिफ्ट करके वैल्यू निकाली है C1 D1 की, अब जब हमने राउंड 2 में की के लिए परफॉर्म करना है तो वो C1 D1 की वैल्यू जाएगी आगे। राउंड राउंड 2 के लिए जो की निकालनी है उसके लिए C1 D1 की वैल्यू जाएगी। यस यस, C1 D1 की जाएगी राउंड 2 के लिए, बिल्कुल, ठीक है। आंचल अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो, हेलो, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। हाँ जी आंचल। सर वही मैंने परम्यूटेड चॉइस सेकंड वाला ही पूछना था, वो हाँ कैसे जी, किया सर? C1 D1 इसमें सब। जो बिट पोजीशन है ना वो फिक्स है, उन बिट पोजीशन से हमने जो वैल्यू होगी ना, उन बिट पोजीशन के ऊपर जो भी वैल्यू होगी उसको हमने डिस्कार्ड कर देना, यही ना क्वेश्चन था। यस सर, वही उसी का ही प्रोसेस पूछना था, ठीक, PC2 का। ओके, क्लियर हो गया ना आपका। ओके, स्लीप अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो सर, हेलो, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। हाँ जी, सर बोले कि जो C1 का मान 24 है और D1 का है 35, 38, 43 और 54। सर कैसे आ गया ये सर मान? ये फिक्स है, ये फिक्स है, जो मैंने आपको नंबर्स लिखवाए ना 35, 38, 43, 54, ये फिक्स है। ये सर हम PC2 में ये वाली बिट पोजीशन हम रिमूव करते हैं। सर यानी ये हम ऑलवेज टाइम फिक्स ही रहेगा ऐसा ही? हाँ हाँ, ये फिक्स है, ये हमारी अपनी सर मर्जी से नहीं है, ये एल्गोरिथम में ही है, ओके सर, ठीक है। ओके। मनप्रीत अनम्यूट। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। ਸਰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪੈਂਸ਼ਨ ਬਾਕਸ ਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੱਸੀ ਸੀ ਡੋਂਟ ਗਿਵ ਦੀ ਮਨੀ ਵਾਲੀ। ਯੈਸ, ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਡੈਮ ਬਲੋਕ ਆ ਸਰ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਾਂਗੇ 6 ਬਿਟ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਫਰਸਟ ਲੈਟਰ ਆਏਗਾ ਉਹ ਸੈਕਿੰਡ ਦਾ ਲਾਸਟ ਲੈਟਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ? ਡੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਰਡ ਬਲੌਕ ਦਾ ਤੇ ਥਰਡ ਬਲੋਕ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਡੈਮ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ 6 ਬਿਟ ਵਿੱਚ ਤੇ ਡੈਮ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਹਾਂਜੀ ਸੈਕਿੰਡ ਬਲੋਕ ਦਾ ਲਾਸਟ ਲੈਟਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਫਸਟ ਤੇ? ਹਾਂ ਹਾਂ, ਈ ਆਏਗਾ। ਉਹ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਐਮ ਲਿਖਾਇਆ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਨਾ, ਈ ਆਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ फोर्थ ਸਰ। ਦਾ फर्स्ट लेटर आएगा ओ लास्ट ਹਾਂਜੀ पे, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ठीक है। ओके, गुरसेवक अनम्यूट योरसेल्फ। गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। हाँ सर जी इस तरह गुरसेवक। ਆਪਾਂ D1 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਰ, 35 38 ਕਰਨੀ ਹੈ ਰਿਮੂਵ, ਤੇ ਉਹ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਬਿਟ 0 ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸਕਿਪ ਕਰ ਦੇਣਾ? ਉਹਨੂੰ ਡਿਸਕਾਰਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ, ਮਿਸ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਛੱਡ ਦੇਣੀ, ਬਿਟ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 48 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਸੀਡਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, क्योंकि 50 वी वांट टू कन्वर्ट फ्रॉम 56 हाँ टू जी, 48, ठीक है तो हमने इसको इग्नोर कर देना है, जी, ठीक है जी। ठीक है ओके, ठीक। ठीक, ओके स्टूडेंट्स
Anybody else? Okay, the next is that topic is also related with the DES, that is multiple DES. बहुत easy है, तो मैं ज़्यादा explain नहीं करूँगा, just is diagrams हैं, वो मैं आपको explain करना. Multiple DES. Multiple DES is divided into two parts. First is double DES. Multiple DES. First is double DES. Second is triple DES. Okay. ठीक है. Now, what is the first? I will discuss double DES. बहुत easy है. 64-bit plain text. On 64-bit plain text, we perform DES cipher. जो अभी हमने डिस्कस किया ना, that DES is performed on 60-bit plain text. Means all 16 rounds we will perform on 64-bit plain text. With yes. Another one thing, double. What is the meaning of double ES? In this, we use two keys. We use two keys. Key 1 56-bit plus key 2 56-bit, and total we have 112-bit key. In double DES, we will use two keys, key 1 and key 2. Here, by using key 1, we perform DES cipher on 64-bit plain text. After that, we get, तो इसके बाद हम कोई ना कोई वैल्यू हमारे पास आएगी. Okay, that value is called temporary cipher or 64-bit middle text. Okay, first we perform DES cipher with K1 key on 64-bit plain text data. We will get 64-bit middle text or temporary cipher. Okay, after that, on temporary cipher or 64-bit middle text, we perform DES cipher with K2 key, with the second key, and after this we will get cipher text. We will get cipher text, or you can write like this. We have plain text, we perform encryption with K1 key on plain text. This is this one. Okay, after that we again perform encryption on with K2 key on this one. Clear? Okay. First we perform DES cipher with K1 key. Okay, we get 64-bit middle text, or you can say temporary cipher. Okay, after that again we will perform DES cipher with K2 key on the temporary, जो ये हमारा आया ना temporary middle temporary cipher, इसके ऊपर हमने फिर से K2 text के साथ K2 key के साथ DES cipher अप्लाई करना है. That is double cipher. ठीक है, ये हमारा क्या है, डबल साइफर. तो अगर आप डिक्रिप्शन करोगे तो वो इससे उलट होगी. डिक्रिप्शन कैसे, ये तो इंक्रिप्शन है. नो, इफ यू वांट टू परफॉर्म डिक्रिप्शन, तो वी स्टार्ट फ्रॉम द साइफर टेक्स्ट with K2
DES यहाँ पर क्या होगा, रिवर्स DE साइफर होगा, रिवर्स DE। अब मैं करवा रहा हूं डिक्रिप्शन का, DES रिवर्स cipher. This is our cipher text. Okay, on cipher text we will perform DES reverse cipher with K2 key. रिवर्स साइफर क्या है, वही ही है, DES साइफर ही है, बट हम जो राउंड्स हैं वो उल्ट चलाते हैं, ठीक है, 16 से उल्ट चलाते हैं डिक्रिप्ट करने के लिए। ओके, नाउ आफ्टर दैट वी विल गेट मिडल टेक्स्ट वैल्यू and this middle text value provide to the DES reverse cipher with K1 key and we get 64-bit plain text. बहुत इजी है, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है इतना बताने के लिए, ठीक है जी, क्लियर। ठीक है, next is ट्रिपल DES। ये हमारे सिलेबस में है, डबल DES सिलेबस में नहीं है, बट ट्रिपल DES करने के लिए हमें इसको करना जरूरी था, इसलिए मैंने आपको बताया। नाउ द नेक्स्ट इज ट्रिपल DES, दैट इज आल्सो इजी, वेरी इजी। Triple DES. It is triple DES use 2 or 3 keys. It can use 2 or 3 keys. Okay, 2 या 3 keys यूज कर सकता है। Second, it is much stronger than double DES. Much stronger than double DES. It is much stronger than double DES. Okay, so now for encryption and decryption we have a structure of triple DES like this. Now, firstly, I will explain triple DES with 2 keys. After that, I will explain triple DES with 3 keys. Firstly, I explain triple DES with 2 keys.
Okay, this is our encryption and that is our decryption. Okay, here we have 64-bit plain text, 64-bit plain text. On 64-bit plain text, we perform DES cipher with K1 key. Oh, okay, and we get a result, suppose A. On this value, or you can say temporary cipher, we perform DES reverse cipher. We perform DES reverse cipher with K2 की. अगर हम K1 की के साथ रिवर्स साइफर करेंगे ना तो हमारे पास क्या है, फिर से वो प्लेन टेक्स्ट आ जाएगा. बट नो, वी आर परफॉर्मिंग DES reverse cipher with K2 की. Okay, with this we get a different value. Okay, and we get output D output. On D values, on D data, we perform DES cipher again with K1 key and we will get 64-bit cipher text. Clear? This is about how we apply triple DES with 2 keys. This is decryption, easy hai. We have 64-bit cipher text. On 64-bit cipher text, we perform DES reverse cipher. जहां पर हमने DES cipher अप्लाई किया था ना, उसके ऊपर हम क्या कर देंगे, रिवर्स साइफर अप्लाई कर. DES का सारा रिवर्स चलेगा. ठीक है, DES reverse cipher we get B, and on the on B data we perform DES cipher with K2 key and we get value A. On A we will perform DES reverse cipher K1 and we get 64-bit plain text. Clear? This is for decryption and by using 2 keys. Okay? Clear? Hanji students, any doubt? Yes or no? Students, yes or no? Gagandeep Kaur, unmute yourself. Good afternoon, sir. Good afternoon, Hanji. Sir, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ DEF cipher ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਐਡ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰੇਗੀ? ਕਿਹੜੇ? ਸਰ ਮਤਲਬ DES cipher ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੀ ਐਡ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕੀ 1 ਜਾਂ ਕੀ 2 ਕੋਈ ਵੀ, सर उससे कोई ऑपरेशन परफॉर्म होएगा वो केड़ा होएगा? मतलब वही होगा जो हमने DES में किया था ना, पीछे सारा करके आए हैं. यस सर. DES विद K1 की वही ऑपरेशन परफॉर्म होगा. 2 कीज यूज हो रही. हाँ, सेम ऑपरेशन होगा. जैसे सपोज करो कि यहाँ पर K1 में हमने 111 111 की थी, तो यहाँ पर हमारी 010 की है, तो 2 अलग अलग कीज हो गई ना. तो ये यूज करके एक की ये यूज करेंगे और डी साइफर करेंगे, दूसरी की ये यूज करेंगे और ये ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे. ओके, ठीक है ना? थैंक यू. ओके. Okay, now the next is triple DES with 3 keys. कुछ भी नहीं है, DS बहुत इजी है. इट इज वेरी इजी, बस थोड़ा सा लेंथी है, अदरवाइज इट इज वेरी इजी. ओके, जस्ट एक बार रिवाइज कर लेना जो मैंने करवाया है. ठीक है, तो बहुत इजी है.
Okay, in triple DES we use three key, 1, 2 and 3 for encryption and decryption. Firstly, we have 64-bit plain text. On this 64 plain text, we perform DES cipher. DES cipher means we perform DES on the plain text by using K1 key. Okay, whatever we get the result that is of A, and on A we will perform DES reverse cipher. We perform DES reverse cipher means DES का reverse जो है ना, जो भी हमने 16 राउंड्स किए थे का रिवर्स चलाएंगे और A के ऊपर अप्लाई करेंगे with K2 key. Okay, whatever the result we get that is of B, on B we perform DES cipher with K3 key, and after that we will get 64-bit cipher text. In this way we convert 64-bit plain text into the 64-bit cipher text by using 3 keys. Okay. Again, for decryption, the whole process is reversed. 64-bit cipher text on 64-bit cipher text. Firstly, we perform DES reverse cipher with K3 key. Okay. Whatever the result we get, that is B. On B, we perform DES cipher with K2 key. Clear? And with the result we get, that is A. Okay. On A, we perform DES reverse cipher with K1 key, and after that we get 64-bit plain text. Okay, we have 64-bit plain text. In this way, we perform triple DES. Okay, in multiple DES we have two types. First is double DES. Second type is triple DES. In double DES, we use only 2 keys. We use only 2 keys. Okay, and in triple DES, we use 3 keys. Okay, we use 3 keys for encryption and decryption. Clear? This is about your DES. If you have any question regarding this topic, बहुत important topic है, exam point of view से बहुत important है. If you have any question regarding this, you can ask me. Okay? Yes, students, if you have any question, you can ask me. Abhinav, unmute yourself. सर एग्जाम में इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए भी आ सकता है? यस, बिल्कुल बिल्कुल, इनके न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं. तो उसमें कंप्लीटली 16 टाइम उसे सॉल्व करना पड़ेगा? नहीं 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 नहीं, पार्ट्स में होगा. ये तो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा. तो मैंने पूछा ना कि न्यूमेरिकल में तो वो बहुत लंबा चला जाएगा. हाँ, नहीं नहीं, ऐसे नहीं होगा. डोंट वरी. ओके, ठीक है. एग्जाम में न्यूमेरिकल भी आ सकते हैं इसके रिलेटेड. अभी तक जितने भी हमने टेक्निक्स की है ना, साइफर टेक्निक्स, उनके भी न्यूमेरिकल आ सकते हैं. नहीं सर, वो तो ठीक है. इस वाले क्वेश्चन में वो लेंथ देख के मैंने पूछा था कि हाँ जी हाँ जी, आ सकते हैं. बाकी और कोई डाउट हो, जस्ट और पूछना हो. हाँ जी स्टूडेंट्स, इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी, बिकॉज दिस इज ऑल अबाउट योर DES. थोड़ा लेंथी जरूर है, बट इट इज इजी टू अंडरस्टैंड. बहुत इजी है, कुछ ज्यादा नहीं है. अंशुल अग्रवाल, unmute yourself. Anshul, are you listening me? Yes sir. हाँ जी, सुन रहे हो ना लेक्चर? Yes sir, सुन रहा हूँ. सारा सुना है? Yes sir. ठीक है.
चलो ठीक है। Babesh, unmute yourself. Yes, sir. Babesh, Yes, sir. सुता तो नहीं करे? नहीं नहीं सर। लेक्चर पता चल गया सारा? क्लियर है? हाँ जी। एनी डाउट? नहीं नहीं सर। ओके। चेतन, unmute yourself. चेतन। यस सर। हाँ जी, एस बॉक्सेस क्या होते हैं? व्हाट इज एस बॉक्सेस? व्हाई वी यूज एस बॉक्स? चेतन, अनम्यूट करो अपने आप को। चेतन, अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो सर, म्यूट हो गया था उधर से। अच्छा, एस बॉक्स क्या होता है? हेलो जल्दी बताओ, किस पर्पस के लिए यूज होता है? फॉर व्हाट सर, पर्पस वी यूज एस बॉक्स होता बॉक्स? है। हाँ जी, हेलो। हेलो हाँ जी चेतन, सर, सब्स्टिट्यूशन बॉक्स होता है, एक्स बॉक्स। फॉर व्हाट पर्पस वी यूज इट? सर, सब्स्टिट्यूशन परफॉर्म करता है। क्या काम करता है इसका? क्या फंक्शन क्या है? किस पर्पस के लिए हमें एस बॉक्स यूज करते हैं? कितने एस बॉक्स यूज किए थे हमने? सर, डिक्रिप्शन करने के लिए यूज होता है। सिक्स बिट आउटपुट को 4 बिट में कन्वर्ट करता है। टोटल कितने एस बॉक्स यूज किए थे हमने? सर, 8। 8। यस। ओके। Okay, students, I'm going to launch poll 2. Poll 2 launch करने जा रहा हूँ, तो you have 5 minutes for it. अभिनव, मैं आपको नोट्स सेंड कर दूंगा आज, और एक सिलेबस मैंने आपको सेंड किया ना, वो भी ग्रुप में डाल देना, बच्चों को सबको दे देना, ठीक है? नोट्स और पीपीटीज जो भी मैं आपको सेंड करूंगा ना, कल करूंगा, कल तक, तो वो सबके साथ शेयर कर लेना, ग्रुप में डाल देना। ओके? करण, क्या शो नहीं हो रहा है? कॉल तो मुझे लॉन्च किए 2 मिनट हो गए, वो देखो आपके नेटवर्क प्रॉब्लम ना हो।
हेलो दिवाकर, अनम्यूट योरसेल्फ। यस सर। सुन रहे हो ना लेक्चर? यस सर, यस सर। सारा नोट्स वगैरह बनाए ना आज के? आज का नोट्स अभी बनाया नहीं, वो बनाऊंगा शाम को। जो मैंने डायग्राम्स वगैरह ड्रॉ की थी। यस सर, स्क्रीनशॉट ले लियो। ओके। यस सर। हाँ जी स्टूडेंट्स, कर लिया सभी ने? मैसेज कर दो अगर कर लिया तो। देखो हमारे आईएएस के स्टूडेंट्स जितने भी टॉपिक्स है ना आईएएस के अभी तक जो भी हमने किए हैं, चाहे टेक्निक से चाहे जो भी है, सारे इजी हैं। जस्ट उनका एक लॉजिक है, बस वो आपको याद करना है। ठीक है, तो थोड़े से लेंथी जरूर है बट इजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है ना, तो ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है कि यहाँ पे हमें समझ नहीं आ रहा कुछ। बहुत इजी टॉपिक्स हैं और इजीली हम उसको क्या आसानी से उनको याद कर सकते हैं। ठीक है जी, ओके। तो मैं पोल बंद कर रहा हूँ, एंड कर रहा हूँ। हाँ जी, आपने कोई क्वेश्चन पूछना हो? यस अभिनव, अनम्यूट करो। सर पोल के आंसर्स बता दो। कर दूंगा सेंड, कल वो भी कर दूंगा साथ में। ठीक है सर। आंसर अनम्यूट करो। सर आपने बोला था रोटर मशीन वाला टॉपिक एक बार दोबारा कंटिन्यू कर लोगे आप? वो किया तो था हमने। सर तो थोड़े से डाउट थे उसमें। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में जब लेक्चर स्टार्ट होगा ना, बस मुझे लेक्चर स्टार्ट होने से पहले एक मैसेज कर देना, मैं आपको वो रिवाइज कर दूंगा। 2-3 मिनट का काम है, ज़्यादा है नहीं, मैक्सिमम 5 मिनट। ठीक है, तो आप जस्ट मुझे एक मैसेज कर देना, मैं रिवाइज कर दूँ।
और स्टूडेंट्स किसी ने कुछ पूछना हो कुछ?